So guys, ఇది నా రూమ్ అండ్ ఇవాళనే మేము అరైవ్ అయినాం. సో దిస్ ఇస్ మై లగేజ్ అండ్ బెడ్. ఊరికేనే బెడ్ మీద కాకుండా వీ హ్యావ్ ఎ బాల్కనీ అండ్ ఇంకా బాల్కనీ రిలాక్స్ కావడానికి మనకు 2 చైర్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఆడ చెప్పిన దానికన్నా యూట్యూబ్ లో చూసిన దానికన్నా మేము వీడికి వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే దిస్ హాస్టల్ ఇస్ ద బెస్ట్ హాస్టల్. సో చూసిన దానికన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ విత్ వెల్ ఫర్నిష్డ్ అండ్ వెల్ సొఫిస్టికేటెడ్. సో we thank Vsauce for providing us with the best hostel. Thank you so much, Vsauce. Thank you, Vsauce. This is my room, guys. And then roommate Divesh, and he is from Karnataka. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ದಿವೇಶ್ ಕಡಿಯಾಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡಿಯಾಲ. ನಾನು ವಿಸೋಸ್ ದ್ವಾರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಜಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ರೂಮ್. ಇವತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯೂನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೇನು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯೂನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ರೂಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಗೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಇಕ್ಕೊಳಗೆ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಥರ್ಮಲ್ವೇರ್. ನಮ್ಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ತರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಸೋಸ್. So next room ಗೆ వెళ్దాం రండి guys. हेलो, मेरा नाम ओम चौधरी है. मेरे पिता का नाम विक्रांत चौधरी. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया का स्टूडेंट हूँ और मैं विसोस कंसल्टेंसी के थ्रू आया हूँ यहाँ पे. ये मेरा रूम है. आज मुझे हॉस्टल के थ्रू अलाउड हुआ है. जैसे कि देख सकते हैं, बहुत स्पेशियस है. यहाँ पे मैंने अपना सब सामान रखा है. यहाँ पे मुझे बालकनी भी दी गई है. मैं एक फर्स्ट सेम का स्टूडेंट हूँ और मुझे मतलब कंसल्टेंसी के थ्रू अलाउड किया गया है और कोई प्रोसेस में मुझे डिफिकल्टीज भी नहीं हुई. मेरा पेपर वर्क पूरा कंसल्टेंसी के थ्रू हैंडल किया गया था एंड इट टुक मी अराउंड 1.5 मंथ्स में मेरा मतलब पूरा प्रोसेस हो गया था और मैं यहाँ पे आ गया.